Now, this is solid state, topic number 1.5. Now we will discuss here how to calculate number of atom in case of any unit cell. Clear? तो अभी तक देखो आपको डेफिनेशन किसका किसका बताया. तो डेफिनेशन ऑफ वी कैन से दैट सी हियर मीन definition of lattice, and then after unit cell, and then after space lattice will come here. Clear? So now number of atom in unit cell. So we know that any crystal lattice is made up of very large number of unit cell, and every lattice point is occupied by one constituent particle. So this particle may be either atom, ion or molecule. It means in case of lattice, combining material or particle may be either atom, ion or molecule. So now let us now work out what portion of each particle belong to a particular unit cell. So now we will discuss means how many atoms are included in different type of unit cell. So now here we shall consider three types of unit cell. Here we will consider three types of unit cell, of cubic unit cell. For simplicity, assume that the constituent particle is an atom. For our simplicity purpose, here we are assuming that constituent particle is, again we can say that atom. इसका मतलब यहाँ पे इसको मैं ब्रीफ अप करूँ तो सी you know lattice is there. So now you know lattice. In case of lattice, here means what will happen? In case of first of all lattice will come. तो lattice से थर्मोडायनेमिक में आया हुआ है ना. तो lattice का मतलब क्या आता है? तो here lattice, तो regular arrangement of minimum 4 point, it is normally known as lattice. And then after unit cell will come, so these 4 point will join with each other, which is two dimensional in nature. So this is normally known as unit cell. So this one is nothing but it is normally known as, here means unit cell. And after formation of unit cell, so here space lattice will come. So this space lattice is further divided into, means we can say that 3 dimension. So this one is 3 dimensional. Lattice आता है, unit cell आता है, space lattice आता है. So now this space lattice is further divided into, mainly we can say that 2 portion. So one we can say that primitive, and second one we can say that in center. तो primitive में only simple cubic will come, while in center here BCC, then FCC, and here we can say that and center will come. In case of space lattice, 3 dimensional material, what will happen? In case of 3 dimensional material, so mainly 2 different type of things are there. One is primitive, जिसमें आता है simple cubic. Then in center में body centered cubic, face centered cubic, and end center cubic will come here. Clear? So now in case of primitive unit cell, what will happen? तो primitive cubic unit cell has atom only at its corner, है ना. और वैसे भी देखो कोई भी क्यूब होता है ना, कोई भी क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब में फर्स्ट ऑफ ऑल corner will come, second one we can say that face will come, third one center will come, and fourth one is edges is there. In case of cube, corner will be there, face will be there, center will be there, and edges will be there. Clear? In primitive cubic unit cell, only corners, so one atom is present at corner. Each atom at a corner is shared between 8 adjacent unit cell as shown in figure 1. तो फिगर 1 कौन सा है? तो ये वाला. ठीक है.
Now 4 unit cell in the same layer and 4 unit cell of the upper or lower level. So this is 3-dimensional material. So this one is 3-dimensional material. Here means 2 layers are there, upper layer as well as lower layer. So therefore only 1/8 of an atom or molecule or ion actually belong to a particular unit cell. मतलब per unit cell here means 1/8 atom will come. Each small sphere in figure 1.9, this is figure 1.9, A, B, C. Clear? Figure 1.9, a primitive cubic unit cell has been depicted in 3 different ways. 3 different ways. Each small sphere in figure 1.9a represent only the center of the particle. So this is, we can say that here means open structure, center of the particle. Clear? Now figure 1.9a represent only the center of the particle occupying that position and not its actual size. So such structure are called open structure. So this one is normally known as open structure. Now the arrangement of particle is easier to follow in open structure. Now so this is complete information of figure 1.9a. Now we will discuss here B. So B depicts space filling representation of unit cell. So this one is again we can say that space filling. ये क्या है? Space filling representation of unit cell with actual size. And figure 1.9c shows actual portion of different atom present in cubic unit cell. It means whenever we are representing any space lattice in case of primitive, then see this is first figure. In a simple cubic, each corner atom is shared between 8 unit cell. आपको याद रखने का, this is 8 unit cell. Here figure 1.9a, it is open structure, this is space filling, and this one is actual position of atom belonging to 1/8 unit. 1 unit cell is there. Clear? In all, since each cubic unit cell has 8 atom on its corner, and total number of atom in 1 unit cell is 8 into 1/8 is equal to 1 atom is there. Total number of atom in 1 unit cell is 8 into 1/8, that is 1 atom will be there. So this is complete information in case of primitive unit cell. It means simple cubic unit cell. So this will be again we can say that complete information. देखो इसको यदि आपको सिंपल समझना हो तो क्या करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग वन कंप्लीट एटम, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो. तो डिवाइड किया तो ये क्या आ जाता है, दिस वन, तो दिस इज 1/2. फिर इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, दिस 1/4. फिर इसको डिवाइड करो तो ये आ जाता है 1/8. मतलब इन केस ऑफ space lattice, each corner, so this one is corner will contribute 1/8 atom. Each faces will contribute 1/2 atom. Each edges will contribute 1/4 atom. Corner 1/8, faces 1/2, edges 1/4. So this is we can say that per corner. This one is per corner and this one is total. So total number of corners are 8, total number of faces are 6, and total number of edges are 12. Total number of corners are 8, total number of faces are 6, and total number of edges are 12. In case of, here we can say that any cube. And with respect to center, here we can say that 1 atom will be there. Total number of atom will be 1. तब देखो जैसे मैंने अभी आपको सिंपल क्यूबिक बोला, तो सिंपल क्यूबिक में here means corner and then after atom. तो value of 1 corner is 1/8. तो 8 corner का कितना होगा, 8 into 1/8, तो 1 atom will come. So this is calculation of total number of atom in simple cubic.
simple. Here we can say that cubic. Now we will discuss here BCC, body centered cubic. In case of body centered cubic, normally what will happen? See, a BCC unit cell has an atom at each corner and also one atom at the body center. In case of BCC, one atom is related with respect to each corner and one atom is related with respect to center. So figure A, so this is open structure. This one is open, B is space filling and C is again means unit cell with portions of atom actually belonging to it. It can be seen that atom at body center wholly belong to the unit cell in which it is present. Clear? So thus in BCC unit cell, 8 corner into 1 by 8, 8 into 1 by 8, तो here means one atom will come with respect to corner. सेंटर की बात करूं तो वन एटम विल कम. तो यदि मैं टोटल की बात करूं तो 1 प्लस 1 here means 2 will come. It means सी जैसे सिंपल क्यूबिक है ना, सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक अब यहाँ पे यदि मैं BCC की बात करूं तो BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 2, तो 2 में भी सी, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्नर and 1 with respect to center. In this way here means total number of atom will be 2 here. In this way here total number of atom will be 2 here. Clear? Now जो थर्ड पोर्शन आता है इसी में ये ना आपका 1.5.3, तो जो थर्ड आएगा तो दिस इज वी कैन से दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक. जो थर्ड पोर्शन है तो दिस विल बी अगेन वी कैन से दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक. द एग्जैक्ट फिगर will be given in your textbook. मैं तो आपको काम चलाओ बता दे रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेने का. तो 1.5.3 में क्या आ जाएगा? तो दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक. In case of face centered cubic, you have to remember one thing. Here total number of atoms are 4 and see one atom with respect to corner. One atom with respect to corner. देखो यहाँ पे आता है फेस और यहाँ आता है एटम. एक फेस की वैल्यू है 1/2, तो 6 का कितना होगा? 6 1/2, 3 विल कम. इट मींस सी 1 एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एंड 3 एटम विथ रिस्पेक्ट टू फेस. तो व्हेनेवर कॉर्नर सी, तो दिस इज वी कैन से दैट क्यूब. हियर वी कैन से दैट कॉर्नर एज वेल एज फेसेस. तो corner 1 and faces 3, तो total number of atoms are 4. Clear? It means in another way we can say that if in space lattice total number of atoms are 4, then it will be FCC. Total number of atoms are again we can say that 2, so this will be again we can say that BCC. And similarly if total number of atoms are again we can say that 4, so that is FCC is there. Total number of atom 1, so this is simple cubic. Total number of atom is again means 2, so this one is again we can say that BCC. And if total number of atom will be again we can say that 4, so that is FCC. So this will be again means calculation. समझ में आया कि नहीं? आपको याद क्या रखना है कि any cube here first of all corner is important, face is important, center is important, edges is important. Clear? Here we can say that face and then after center and then after we can say that corner and then after edges. In case of cube, value of one corner with respect to atom, so that is 1/8. Face का value 1/2, edge का value 1/4 और center का value 1. तो यदि मैं टोटल की बात करूं टोटल, तो टोटल नंबर of corners are 8. Total number of faces in any cube will be 6 and total number of edges are again is 1. Total number of edges are 12 and center, here we can say that center will be 1. On the basis of this information we have to calculate. We have to calculate here means total number of atom in simple cubic, then BCC and then after we can say that FCC. अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे अभी मैं आपको सिंपल बताऊं
कि अभी तक जो आपने रीड किया, तो कोई भी क्यूब हो, इसके अंदर आपका कोई भी क्यूब जब आएगा ना, तो उसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू रिमेंबर नंबर ऑफ एटम, यू हैव टू रिमेंबर नंबर ऑफ एटम, क्लियर। तो जैसे कॉर्नर का वैल्यू वो सब आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई वन कॉर्नर, कॉर्नर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम, तो कॉर्नर विल कंट्रीब्यूट 1/8, क्लियर। हियर वी कैन से दैट, देखो कॉर्नर, तो कॉर्नर विल कंट्रीब्यूट 1/8 एटम, सेंटर will contribute 1 atom, and face will contribute 1/2 atom, and then after edges will contribute 1/4 atom. चलो मैं ऐसा बोलूं कि if PQ is one cube where P will occupy all corner and Q will occupy all faces, then determine correct formula, then determine correct formula. तो this one is क्वेश्चन। अब आता है आंसर। देखो आपको पता है कि सी, तो यहाँ पे क्या है, तो दिस वन इज क्यूब। अब क्यूब में क्या है, P है, एंड देन आफ्टर Q इज देयर, तो P विल ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर, Q विल ऑक्यूपाई ऑल फेसेस, तो दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन क्वेश्चन, क्लियर। चलो कॉर्नर, तो इन केस ऑफ कॉर्नर हियर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8 एंड वैल्यू ऑफ वन कॉर्नर इज 1/8, तो 8 into 1/8, here means 1 will come, value of one corner is 1/8 and total number of corners are 8, तो 8 into 1/8, 1 will come. Similarly faces, तो देखो हम वैल्यू ऑफ वन फेस, तो वन फेस is equal to 1/2, तो टोटल 6 फेसेस, तो 6 फेस का कितना, तो 6 into 1/2, 3 will come. It means whenever we are determining formula, तो P as well as Q will come, where at the place of P we are writing 1 and at the place of Q we are writing 3. So on the basis of this information, here formula will be PQ3, where in case of PQ3, P will contribute 1 and Q will contribute, here we can say that 3, clear। अब सेम क्वेश्चन है, सपोज सेम क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे बोलूं डिटरमाइन फॉर्मूला इन above situation if atoms of any one axis with respect to phase is removed. सेम क्वेश्चन है, क्लियर। इधर क्या बोला, डिटरमाइन फॉर्मूला इन अबव सिचुएशन if atoms of any one axis with respect to face is removed। तो चलो जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है ना, इसका मतलब कॉर्नर में नो चेंज इज देयर, हियर P is 1, बट फेस की बात है, फेस एनी वन फेस, तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर। जैसे देखो कोई भी क्यूब होता है ना, इसको मैंने x बोला, ये आपका y है, क्लियर, x y एंड देन आफ्टर z विल बी देयर, तो देखो 1/2 इधर, 1/2 इधर, 1/2 1/2, तो मैंने एक ये जो रेड है ना, ये z एक्सिस है, ब्लैक है ना y एक्सिस है, और ग्रीन जो है ना वो x एक्सिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैंने रेड वाला हटा दिया, तो रेड वाला हटाया, तब कितनी फेस हो गई, देखो यहाँ पे 6 थी,
अब एक एक्सिस हटा दी और पर एक्सिस 2 फेसेस आर देयर, तो यहाँ पे क्या होगा 6 के बदले 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। मतलब इन दिस क्वेश्चन फॉर्मूला विल बी PQ2, फॉर्मूला विल बी PQ2। तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल कम। तो आपको थियरी नहीं करना है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉर्नर, फेस एंड सेंटर। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे विच वी विल डिस्कस इन एक्सरसाइज।